बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट ना आने के बाद फाइनली हमने नया गेम शुरू कर लिया है, असैसिन क्रीड 3। तो ये डेजमंड माइल्स का पिताजी है, ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं, इसकी बात सुन लियो पहले। Seriously, maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. तो गेम की ये स्टोरी तक समझ गए होंगे, ठीक है ना आप। जो फर्स्ट सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने एप्पल ऑफ ईडन बनाया, ठीक है ना, मतलब पीसेस ऑफ ईडन बनाए, ठीक है, जो भी पीसेस ऑफ ईडन थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अब एक उससे बड़ी दिक्कत क्या आ रखी है, वो कैटास्ट्रॉफी आने वाली, ठीक है, क्योंकि 21 दिसंबर 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली, ठीक है, वो टाइम में भी आएंगे इसमें। तो फाइनली मेरे ख्याल से इस पार्ट में वो टाइम आएगा, ठीक है ना। आज देखिए 10:31 है, ठीक है ना, 10:31 लिखा हुआ उसमें, 10:31 मतलब 10वां महीने चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। 31 तारीख हो रहा, ठीक है, 11 और 12 भी 2 महीने बचे इनके पास, दुनिया खत्म होने से पहले, ठीक है ना। अब उससे पहले उस एप्पल वीडियो को निकालना चाहते, ठीक है, मेरे ख्याल से वॉल ढूंढ रहे वाले कुछ ना कुछ पार्ट्स में होगा, वो सब हुआ नहीं भी, ठीक है ना। तो मज़ा आने वाला इस वाले पार्ट है, बहुत कुछ है। और इस पार्ट में आपको एक और मैं क्लू देता हूँ पहले गेम के बारे में, ठीक है। इस वाले पार्ट में ना अल्तायर से साथ खेलेंगे हम, नहीं, हमारा एवेटार ना अल्तायर होगा ना एजियो होगा, ठीक है। हमारा एक नया एवेटार आने वाला है इसमें, ठीक है। तो और मज़ा आने वाला है, ठीक है। और इसमें सच्ची बात है, इसमें अमेरिका और ब्रिटिश की भी लड़ाई होगी, ठीक है ना। 18वीं सेंचुरी गेम में ये शूट किया गया है गेम, ठीक है ना। हमने 11वीं-12वीं सेंचुरी खेल चुके हैं, 15वीं-16वीं सेंचुरी खेल चुकी है टीम एजियो वाला टाइम। अब एक नया टाइम आ चुका है, 18वीं सेंचुरी का टाइम आ चुका है, ठीक है गेम। तो फिर देखते हैं, शुरू करते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो असैसिन क्रीड 1, असैसिन क्रीड 2, असैसिन क्रीड ब्रदरहुड और उसका असैसिन क्रीड रेवोल्यूशन, 4 पार्ट खेलने के बाद हम आ चुके हैं 5वें पार्ट पर, जो कि असैसिन क्रीड 3, ठीक है। पहले पार्ट में हमने शुरू किया था अल्तायर से, अल्तायर इबिन लाएद से, ठीक है ना। बाकी के बचे 3 पार्टों में हमने एजियो से खेला, ठीक है। इस पार्ट देखने में क्या मिलता है हमें, हम अल्तायर से खेलते हैं कि हमारा आउटार बनता है, फिर
वो बनता है, ठीक है, दूसरा वाला एजियो बनता है। कोई नया बनेगा तो भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। गेम की ग्राफिक ज़बरदस्त है, ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। गेम बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा पीसी कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है इसे। गेम दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। डेजर्ट में काफ़ी जवान लग रहा है इस टाइम पे। चलो ना, जवान होगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि एनिमल्स में टाइम बहुत कम लगता है। In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. अगर आप में से कोई ये गेम खेल रहा है इस वक्त, तो इसका ये मतलब समझूंगा कि आपने पुराने के 3 गेम खेल चुके हैं, पुराने 4 गेम आप खेल चुके हो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है इसमें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको शुरुआत पहले गेम से करनी पड़ेगी अगर आपको गेम में आना, ठीक है। उसके बाद अगले गेम में जाना। I think we're here. तो गेम की स्टोरी तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी मुझे लग रहा है गेम, ठीक है। क्योंकि ये गेम जो है ना इनका, ये गेम इनका बहुत मेन गेम है, ठीक है। ब्रदरहुड जो और लिबरेशन गेम जो था ना, वो उतना उनका मेन गेम नहीं था उनका, ठीक है ना। वो केवल बनाना था उनको आगे स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, रोम की स्टोरी को आगे करने के लिए। और उसके बाद The key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to Okay. find out what the temple wants from you. ट्रेनिंग में पूरी पार कर चुके, चलने फिरने की ट्रेनिंग पूरी पार कर चुके, ठीक है। अब गेम यहाँ शुरू होने वाला है मेरे ख्याल से, ठीक है। माय गॉड, काफ़ी नया कैरेक्टर मिला है, ठीक है, इस बार डेजमंड माइल्स को। वो लग तो नहीं रहा है एजियो है पूरा, क्योंकि एजियो तो काफ़ी बड़ा हो चुका है ना। Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation.
Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. लास्ट टाइम जब हमने गेम खेला था सबसे पहले अल्तायर वाला गेम जो खेलता हमने वो 11-12 सेंचुरी गेम था, ठीक है ना। उसके बाद हमने 15-16 सेंचुरी में गेम खेला हमें, ठीक। Invitation, please. Shall I take your coat, sir? No need. Yes, we did. Scarlatti and Pergolese. Another Garrick. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Good evening, sir. This way, please. My apologies. इसकी अंग्रेजी थोड़ा अलग है इसकी ना, मेरे ख्याल से ये एच तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कोई और कैरेक्टर है मेरे ख्याल से वाला, ठीक है ना। कोई और एंसिस्टर है यहाँ पे, ये एच वाला कैरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। कोई और नया कैरेक्टर है मेरे ख्याल से ये। और अरेबिला लग रहा है मुझे, काफ़ी अलग लग रहा है मुझे इंग्लैंड वाली फीलिंग आ रही है, मुझे इंग्लैंड स्पेन वाले फीलिंग आ रही है मुझे। Reginald? Can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. You see him? पुराने पैटर्न जैसे थे कि वी का इस्तेमाल करना है इक्लूजन के लिए, ठीक है ना। देखते हैं वी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कहीं देखने की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहीं कहीं हाईलाइट हो रहा है और कहीं नहीं हाईलाइट करने के लिए, तो ठीक है। He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. This is death without reprieve. I may mention a gag. £40. That Betty's Rhino I'll save her from transportation. चलो फिर मेरे ख्याल से पहला कत्ल यहीं करेगा। 1,000 pardons. My apologies. Oh my So God. sorry. 1000 pardons। नई इंग्लिश सब सीखने को। गेम तो काफ़ी सिंपल लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। गेम वैसे ही पूरा काफ़ी अच्छे हो चुके हैं गेम के बाद, माननी पड़ेगी, ठीक है ना। एरो मार्क जहाँ बोला वहाँ जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। गेम के रूल तो मानने पड़ेंगे जहाँ जाने के लिए बोलते हैं। और मुझे फीलिंग आ रही है इंग्लैंड का कोई एरिया मेरे ख्याल से, इंग्लैंड दिखा रखा है मेरे ख्याल से कोई, ठीक है ना। क्योंकि इनकी विग देख कर लग रहा है मुझे, ठीक है ना। इनकी विग वैसी अभी मुझे इसका नाम तो पता नहीं, मुझे इस कैरेक्टर का नाम क्या है मुझे नाम पता नहीं। खेल तो डेजमंड रैडिक, और डेजमंड का बाप तो सुनाई दे रहा है। डेजमंड का बाप ही मतलब गेम में, मतलब एनिमल्स के बगल में। समझ में आया वो, ठीक है ना आपको।
ठीक है ना, माउस का बटन रिपीटली दबाना था उस टाइम पे, ठीक है ना, अप डाउन करने के बाद में रिपीटली दबा रहा था मैं, वो देखने वो पढ़ा था ध्यान से मैंने, अब पढ़ लिया, मतलब समझ में आ गया। ओह शिट, अच्छा गेम का हिस्सा था यार ये। एक्चुअली मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ जाग रहा हूँ रात को, पता नहीं क्यों यार, रात के 12 बज रहे जागरण हो रहा है यहाँ पर। ओह शिट, डरा रहा है भाई मुझे, ये ना पहली बार में फेल हो जाऊँ मैं गेम में। हमारे बगल में जागरण हो रहा है, पता नहीं किस बात का जागरण हो रहा है यार इसमें। ये एजो तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये एजो तो दिखने में अलग था यार काफ़ी। Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Sorry old man, you have to die. Oh shit. फिर एक और बच्चे का भविष्य बर्बाद। तमीज़ से निकल जाओ यहाँ भाई, इतनी बड़ी मौत कर दी है मुझे पता नहीं लग रहा है, यहाँ पक्का बंदूक ही पक्का होगी, ठीक है ना, वही ये एरर। तेज़ दौड़ नहीं रहा, ठीक है, मैं दौड़ा रहा हूँ लेकिन दौड़ नहीं रही है। ओ मैं किसको पकड़ लिया, उधर जाना है। It happened right in that balcony. What are those men doing in there? Move! Move! Hey! जो लोग शक्ल से कातिल लग रहे हैं ना, सबसे पहले गार्ड्स ने उन्हीं को पकड़ा, ठीक है ना, उसको मनाओ कि शक्ल सही है इसकी, शक्ल का बहुत बड़ा रोल होता है यार, लोग शक्ल देख के चोर मानते हैं आपको यार, लोग बाद में देखते हैं आपने गलत किया नहीं किया, लोग पहले जज कर लेते हैं आपको शक्ल से। ये एनिमल्स देखो आगे रास्ता बना रहा, दिख रहा आपको, आगे आपका ड्रीम बना रहा मतलब एनिमल्स। And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key, and if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world.
Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all.